Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope that you are all well. The purpose of this video is basically to provide you the notes for the 9th class Pakistan Studies for Lahore board, because I know this is the need of the time, because there is no English book in the market, so students are struggling hard. For those students who are trying to attempt in English, this is a baseline, this is a guideline for those students. These are the points they have to elaborate these points in their answers. In this video I am giving the answers or the basic points of the answers for two long questions in your exercise. So here is your notes file. This file is showing you the points for the answers to the questions. Right now in front of you there is question number 1. The question number 1 is write the sources of ideology and its importance. Once again I want to make it clear that these are the points or these are the headings. You have to explain these headings, these points in your answers. मैं भी आपको बताता हूँ कि आपने इसको कैसे एक्सप्लेन करना है. तो यू पीपल आर जस्ट रिक्वायर्ड टू लिसन मी वेरी केयरफुली, बिकॉज माई वर्ड्स आर बेसिकली द आंसर्स और द एक्सप्लेनेशंस टू दीज पॉइंट्स. ठीक है, तो अब मैं इसको स्टार्ट करने लगा हूँ. आपने इसको सुनना है गौर से. दोज आर द पैराग्राफ्स. जो आप सुनेंगे वही पैराग्राफ आपने फिर आंसर में लिखने होंगे. तो मैं इसको स्टार्ट करता हूँ. क्वेश्चन है राइट द सोर्सेज ऑफ आइडियोलॉजी एंड इट्स इंपॉर्टेंस. 8 मार्क का क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गिव द इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन में पहले हमने क्या एक्सप्लेन करना है? 20th सेंचुरी. इस 20th सेंचुरी का क्या मतलब, हमने क्या लिखना है? द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट ऑफ 20th सेंचुरी. ठीक हो गया? ये लाइन आपने लिखनी है. लाइन अगर आपको याद ना रहे तो आप वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं. ठीक है, उसके बाद डेफिनेशन लिखनी है हमें. ये आप देख रहे हैं कि ये डेफिनेशन का यहाँ पे हेडिंग दी हुई है. डेफिनेशन क्या है? सच प्रोग्राम which provides a foundation for the solution of political, social and cultural problems. This is the definition of ideology, right? Then comes the second major heading, which is the sources of ideology. अब sources of ideology में पहली heading है common religion. Common religion में you will be explaining that common religion means religion is a binding between its followers. The followers of same religion have the same ideology. Like the Muslims living all over the world follow the same ideology. So religion becomes a basic point among its followers, a fundamental point among its followers. Then comes common political purposes. अब इसमें आपने क्या लिखना है? Common political purposes are the points on which some people are gathered for the same political purpose. Full stop. These political purpose provides them the baseline to act in the same direction to get their political purposes. For example, the Muslims of subcontinent gathered on the platform of All India Muslim League and they attained their political purpose, which was the creation of Pakistan. उससे अगली हेडिंग जो आपने एक्सप्लेन करनी है, दैट इज कॉमन एजुकेशनल पर्पसेस. राइट, इसमें आपने क्या लिखना है? कॉमन एजुकेशनल पर्पस इज एन अदर पॉइंट टू ब्रिंग द persons on the same point having the same educational purposes. For examples, the students of the same class thinks accordingly. They think on the same pattern. Next one is common economic purpose. Common economic purpose में आपने क्या लिखना है? The people who want to attain a common economic purpose, they are mostly gathered on the same platform. For example, during the British rule, Muslims were being suppressed and they were not being given the admissions in educational institutes, and they were also suppressed by applying some economic sanctions. So get their economic purpose fulfilled, to get rid of these sanctions, they gathered on a platform and they started their struggle. So economic purpose give them a baseline. Common cultural purpose.
Sometimes some cultural points become a common purpose among the followers of the same culture. For example, during the British rule, they were trying to erode the culture of the Muslims, like they were imposing their own educational, economic, and political policies. So Muslims thought that they should prevent, they should protect their culture. So they gathered all along and they tried to protect their cultural values. So cultural purposes become a core purpose among the Muslims of subcontinent in this way. अच्छा, ये हो गए उसके सोर्सेज ऑफ आइडियोलॉजी में जो आपने लिखना है. उसके बाद आपका आ जाता है सिग्निफिकेंस ऑफ आइडियोलॉजी. सिग्निफिकेंस ऑफ आइडियोलॉजी में ये जो हेडिंग्स हैं इन्हीं को आपने एक्सप्लेन करना है. जैसे इसकी पहली हेडिंग है, पहला पॉइंट है यूनिटी. द फर्स्ट इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस ऑफ द आइडियोलॉजी इज इट brings unity among its followers. The people having same ideology are united people on the basis of their ideology and they struggle to attain their purpose. Number 2, invisible. The ideology is always invisible. No one can snatch your ideology and a person acts upon its ideology with a great freedom. Number 3, consciousness. Any ideology provides a consciousness to its follower and a follower of the ideology becomes a strong person moving towards its destination. Spirit. Ideology provides a strength from inside to a person. It provides a spirit to fulfill a purpose, to attain a purpose. These are the significance of ideology. These points are showing the significance of ideology. So you have to explain these points under the heading of significance of ideology. फिर लास्ट पे हमारी हेडिंग आ जाती है कंक्लूजन. कंक्लूजन में हम लिखेंगे आइडियोलॉजी इज अ सॉलिड बेस टू अचीव पॉलिटिकल, सोशल एंड कल्चरल टारगेट्स बाय a nation. Then question number 2 है आपका, आपकी एक्सरसाइज में give a detail of elements of ideology of Pakistan. यानी एलिमेंट्स वो चीज होता है जिससे मिलके कोई चीज बनी होती है. तो आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान किन चीजों से मिलके बनी है, किन चीजों पे उसकी बेस है, उसके एलिमेंट्स क्या हैं. इसका जब हम आंसर लिखेंगे तो उसमें पहली हेडिंग होगी इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन में विल बी एक्सप्लेनिंग the ideology of Pakistan is ideology of Islam basically. Pakistan was created with the struggle of Indian Muslims. So ideology of Muslims is the baseline for the ideology of Pakistan. फिर नंबर 2 हेडिंग उसमें आती है beliefs. The first element of the ideology of Pakistan is belief system. उसमें फिर आगे फर्दर हेडिंग्स हैं जो आपने एक्सप्लेन करनी है. नंबर 1 इज ईमान. नाउ व्हाट इज ईमान? ये आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है. एग्जामिनर आपको शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, गिव अ डेफिनेशन ऑफ ईमान, या व्हाट इज ईमान, व्हाट इज मेंट बाय ईमान. ईमान तो इस तरह से वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है. उसका आंसर क्या होगा? ईमान मीन्स टू हैव बिलीव इन अल्लाह, प्रॉफिट्स, एंजल्स एंड डिवाइन बुक्स. दिस इज कॉल्ड ईमान. और उसके बाद है इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर. अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है. अल्लाह हैड पावर अबव ऑल द थिंग्स. ये आपको 2 मार्क का शॉर्ट क्वेश्चन अलग से आ सकता है कि राइट द ट्रांसलेशन ऑफ इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर. उसके बाद है तौहीद यानी वननेस ऑफ अल्लाह. तो तौहीद क्या है? तौहीद मीन्स टू हैव बिलीव दैट देयर इज ओनली वन गॉड, दैट इज अल्लाह. दिस इज वननेस ऑफ अल्लाह. He has created all the things and he is above all the things. तो this is तौहीद. ये आप इसमें लिखेंगे. फिर उसके बाद है इन्नी जाइलू फिल अर्दी खलीफा. ये वही सूरह बकरा की जो आयत है उसका ट्रांसलेशन है. इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके हम लिखेंगे इन्नी जाइलुन फिल अर्दी खलीफा.
इसका मीनिंग क्या बनेगा वो मैं आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके अभी बता रहा हूँ। एक मिनट सिर्फ।